Hello dear student, this is video number 4 ongoing chapter number 7 class 11 history changing cultural traditional. In the previous 3 videos we have discussed lots of about to Renaissance and what about the change, especially the factors responsible to bring Renaissance in Italy. Now today we discuss the topic is architectural development of the period. Here the means of the period, that means the time period of the 13th to 17th century and during the Renaissance start in especially the Europe and Europe maybe Italy. So in the 15th century Rome made its mark in a spectacular way. Since the popes were the politically stronger by the 1417 after the weakness caused by the election of two rival popes in 1378, they actively increased study of Rome. So the new classical architecture was the actually a revival of the imperial Roman style. So when टाइम समथिंग इन द 15th सेंचुरी जब वहाँ पे बेटा पॉप के इलेक्शंस को लेके थोड़ा सा कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ. सो ये तो एक अलग साइड पे था. उसके साथ साथ वहाँ पे जो आर्किटेक्चर्स थे, द न्यू क्लासिकल ऑफ आर्किटेक्चर्स एंड द स्टडी ऑफ द आर्किटेक्चर्स, दे आर आल्सो द सपोर्ट पर्टिकुलरली वन पॉप. सो आफ्टर द मेकिंग द पॉप वहाँ पे एक आर्किटेक्चर्स में और द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर्स एंड द स्टडी ऑफ आर्किटेक्चर्स एक न्यू थिंकिंग वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ. न्यू क्लासिकल आर्किटेक्चर वॉज एक्चुअली द राइवल ऑफ द इम्पीरियल रोमन स्टाइल. तो जो पुरानी रोमन स्टाइल थी बेटा, जिसके अंदर आर्किटेक्चर्स होते थे, उसके अंदर और जो न्यू आर्किटेक्चर स्टाइल्स इंट्रोड्यूस हो रही थी उनके अंदर भी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्ट बन रही थी. सो द वेल्दी मर्चेंट, अब जो धनी लोग थे, व्यापारी थे, popes and aristocrats engaged those the architectures who were familiar with the classical architectures. So यहाँ पे वन साइड ऐसी ग्रुप था जो बेटा पुरानी जो आर्किटेक्चर्स है, जो क्लासिकल आर्किटेक्चर्स है, उसको फॉलो कर रहे हैं. जो आर्किटेक्चर उनको फॉलो कर रहे हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं. और इसमें बेटा वहाँ के वेल्दी मर्चेंट्स हैं, पॉप्स हैं, और इसके अलावा बेटा वहाँ के एस्ट्रोक्रेटर्स भी हैं. They support classical architectures. Then artists and the sculptors began to the decorate the building with the painting, sculptures and the reliefs. ठीक है, अलग अलग स्टाइल से, पेंटिंग से, रिलीफ से, स्कल्पचर से जो वहाँ की बड़ी बड़ी मॉन्यूमेंट्स थी, बिल्डिंग्स थी, उनको वो डेकोरेट कर रही थी. So several persons were the expert equally as the painters, sculptors and architects. Michael Buonarroti is the remembers for his the imperial work in the Rome, such as the paint selling of the Sistine Chapels. ठीक है, जो सिस्टाइन चैपल्स वहाँ का जो है बेटा रोम का मेन जो बिल्डिंग था, उसको उसकी जो सीलिंग्स थी, उसकी छत पे बेटा पेंटिंग के लिए माइकल एंजेलोस को याद किया जाता है बेटा. सेलिंग इज द एंड द सिस्टाइन चैपल्स इन द स्कल्पचर्स कॉल्ड द पिएटा. और माइकल एंजेलो ने सबसे उनका जो इमेज जो पिक्चर है द फेमस ऑन द वर्ल्ड हिस्ट्री, जो उन्होंने सिस्टाइन चैपल्स के छत पे किया था, सेलिंग पे, द पिएटा. सो द पिएटा पिक्चर्स किसका है? माइकल एंजेलो का. सेकंड है द डिज़ाइन ऑफ द डोम ऑफ द सेंट पीटर्स चर्च. जो सेंट पीटर्स चर्च था, ठीक है, वहाँ के उन्होंने उसके डोम को भी पेंट किया. फिलिपो बेनेसिस start to career as the sculpture was become the famous designing the Daimon of Florence. By this time artists were the famous individually by their name instead being the member of the group of or a clique. Now next point is the development in the printing technology. So European borrowed the idea of printing technology from Chinese peoples. तो यूरोप के लोग प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का प्रिंट कैसे करते हैं, ये जो आइडिया लेके आए थे, दे कम फ्रॉम चाइना. बिकॉज द यूरोपियन ट्रेडर्स इन द डेवलपमेंट डिप्लोमेट्स बिकेम द फेमिलियर विद ड्यूरिंग देयर विजिट टू द मंगोल्स रूलर्स. तो ये जब वहाँ पे जाते थे तो दे आर द फेमिलियर विद द चाइनीज. सो द कोड्स द अर्लियर टेक्स्ट वर द फाउंड इन द हैंड रिटन फ्रॉम द जोहान गुटनबर्ग्स इज जर्मन मेड द फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस एंड प्रिंटेड 150 कॉपीज ऑफ द बाइबल in the 1455.
तो बेटा देखिए प्रिंटिंग प्रेस को इन्वेंट किसने किया था? जोहानन गुटेनबर्ग ने। ये जर्मन के थे, जर्मनी कंट्री के पर्सन थे और इन्होंने यहाँ पे पहली प्रिंटिंग प्रेस बनाई और पहली जो प्रिंटेड बुक है बेटा द बाइबल क्रिश्चियनिटी से बिलोंग करेगी और इसकी 150 कॉपीज़ इन्होंने पब्लिश की थी या प्रिंटेड किया था इन 1455 के अंदर। द सेम टाइम was taken by the monk to write the single copy of the Bible. All the classical texts in the Latin is the language, had been printed in Italy by the 1500 AD. With the availability of the printed books, the dependency of the students over the lectures notes was ended. तो जब बुक्स उनको प्रिंटेड मिलने लग गई बेटा तो जो लेक्चर्स होते थे या जो क्लासेस में होते थे बिकॉज हैंड रिटन्स बहुत कॉस्टली होता था और टाइम भी बहुत पीरियड होता था सो नाउ वही लेक्चर्स उनको प्रिंटेड फॉर्म में मिलने लग गए। So the idea, opinions and the informations spread widely and rapidly। ठीक है, ये जो आइडियाज़ थे जो उनके ओपिनियन थे, इंफॉर्मेशंस थी, नाउ द प्रिंटेड, तो ये बेटा वाइडली और रैपिडली बहुत जल्दी जल्दी लोगों तक सेपरेट होने लगा, स्प्रेड हो गया, वहाँ तक फैल गया, लोगों के पास पहुँच गया। द प्रिंटेड बुक्स द प्रमोटेड द व्यूज़ रैपिडली, और बेटा जो व्यूज़ थे उनके थिंकर्स के जो व्यूज़ थे देयर विल बी आल्सो spread in the rapidly. So this made it the possible for the individuals to read books as it was the possible to buy the copies for oneself. And the printed books were in the chief factors to spread the humanism culture quickly across the Alps by the end of the 15th century. This is the some things जहाँ से बेटा national humanism वाला Renaissance and the ideas of humanism there are the separate. Now, new topic, the new concept of human being. One of the features of humanist culture was loosening the control of the religious over the human life. Italians remained religious through they were attracted by the material wealth, powers, and the glory. A humanist from the Venice, Franco Barbara wrote the pamphlets for defense to the processions of the wealth and called the witcher. Leandro Velas, who thought the study of the history lands the man of the attempt for the life of the perfections, he and his book on pleasure. ठीक है, तो on pleasure लिखा बेटा लिएंजो वाला। On pleasures is commented the Christians restrictions against the pleasures, ठीक है, and the concern over the good manners that how one should speak the politely and the dress properly. Humanism spread to the individuals who were able to the shipping their own the lives through the resources and rather than the mere such as the power and the money. So these beliefs was linked with the view that the human nature was mainly sided which went against three separate orders in the feudal society. So Machiavelli believed that is the important line of this topic. Machiavelli believed all men are bad and every ready to the display their vicious natures partly because the facts the human desires are the instability. So in this video we have learned how to architectures develop and the printing technology has developed. Thank you and watching for these videos to all. Thank you.